Morning, my dear people, teachers of B.Ed second year. The subject is Pedagogy of English, and the topic is types of evolution, types of evaluation. What are the types of evaluation? On the basis of purpose, what is the purpose of evaluation? The evaluation has been classified in 4 types. दिस इज बेसिस ऑफ पर्पज. व्हाट उद्देश्य क्या है मूल्यांकन का, उसके आधार पे इवोल्यूशन प्रोसेस इज ऑफ 4 टाइप्स एज मेंशन बिलो. फर्स्ट, प्लेसमेंट इवोल्यूशन. फर्स्ट इवोल्यूशन इज प्लेसमेंट इवोल्यूशन. प्लेसमेंट इवोल्यूशन इज entered at the beginning of the course to know the behavior of the learner and how much he is capable. It is to know it in relation to a particular course. Well, in particular course, how much he is capable, ability, how much he has ability. The purpose of this evaluation is to evaluate the attitude of the learner. What is his attitude? How his behavior is? To test his behavior, whether he is suitable for that course or not, or whether some amendment is needed. This is for that purpose. Now, second is formative evaluation. Formative evaluation means this is affirmative evaluation. Formative यानी फॉर्मेशन. किसी को यदि गलत है तो सही करना. Formative evaluation. On the basis of placement evaluation, this formative evaluation is given. Formative evaluation is meant for evaluating the midway of the course. जब कोर्स चल रहा है बीच में ये formative evaluation आता है. It is a midway evaluation. What is the development of the learner? At the midway development of the learner in relation to a course. In that course, whether he is grasping or not, whether he is understanding or not, or if there is some difficulty with him, this is to know that formative course means to know the understanding of his difficulties. At the midway of the course, जब कोर्स चल रहा है बीच में ये formative evaluation लिया जाता है. It is administered during the course. कोर्स के दरमियान ही ये लिया जाता है. Is offered. On the basis of formative evaluation, necessary feedback programs are provided. उसको feedback दिया जाता है, उसको प्रतिपुष्ट किया जाता है. कमी है तो उसको सही किया जाता है. This is midway. This is at the entry. This is at the beginning of the course. This is at the midway course. Third evaluation is diagnostic evaluation. We have learned this word before, diagnosis and remedy. Diagnosis का मतलब ही क्या होता है? पता लगाना. जैसे डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बीमारी का पता लगा लेता है और फिर इलाज करता है. तो जो बीमारी का पता लगाना है वो डायग्नोसिस कहलाता है और उसका इलाज करना होता है वो रेमेडियल कहता है, रेमेडी कहलाता है. इसी इन द सेम वे इन आवर एजुकेशन ऑल्सो टू फाइंड आउट द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन इज गिवन. डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन इज meant for का मतलब इसका अर्थ है, इसका पर्पज है. द पर्पज ऑफ दिस इज प्रोवाइडिंग रेमेडियल मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर. डायग्नोस्टिक के अंदर क्या कमी रह गई है तो उसको रेमेडियल टीचिंग दिया जाएगा, उसको अतिरिक्त पढ़ाया जाएगा. The aim of diagnostic evaluation
is to find out the weakness of the student or the weak points of the student and give him remedial teaching. Development of the learner. When formative evolution fails, the diagnostic evolution starts. At the beginning, when formative evolution he does not do so, then this diagnostic means in which point he is weak. फॉर्मेटिव का मतलब तो फेल हो गया, सही नहीं है, लेकिन डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन tells us in which point he is weak, which things he has not learned, and then remedial teaching is given. The main purpose of executing का मतलब होता है लागू करना, किसी कोर्स को लागू, किसी परीक्षा को लागू करना. The main purpose of executing diagnostic evolution is to find out learning difficulty. बच्चे को लर्निंग में क्या डिफिकल्टी जा रही है, that is to find out, and to provide remedial measures यानी तरीके, ठीक है, उपचारात्मक तरीके. हिंदी में क्या कहते हैं रेमेडियल को, उपचारात्मक, और डायग्नोस्टिक को क्या कहते हैं, निदान करना. अन्य दूसरे सब्जेक्ट में भी होता है निदान करना, उपचार करना. तो according to the diagnostic evolution, remedial measures are to be given to remove the learning difficulty. जिससे क्या है, उसकी लर्निंग डिफिकल्टी है उस कोर्स के अंदर, किसी भी कोर्स में, ITI का है कि किसी भी कोई कोर्स है, MBBS का है कि BTech का है, या कोई भी कोर्स हो, BEd का कोर्स है, तो उसके अंदर जो दिक्कत आ रही है उसको रिमूव करना. दिस इज द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, टू फाइंड आउट द वीक पॉइंट एंड टू गिव द रेमेडियल टीचिंग. And last is the summative evolution. This is entered at the last of the course, at the end of the course. And what is the purpose of this? It is meant for providing grades, certificates and merits. लड़के को प्रमाण पत्र देना, लड़के को ग्रेड देना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और मेरिट देना, रैंक देना, क्लास में वो फर्स्ट है, सेकंड है, कौन सा पोजीशन है, ये देने के उद्देश्य से दिस समेटिव एवोल्यूशन इज एग्जीक्यूटेड. What is the purpose of summative evolution? It is given to provide the grades, certificates and merits to the learner according to his achievement, according to the performance in the summative evolution. It is administered का मतलब दिया जाता है, इस परीक्षा को प्रवेश किया जाता है. This is administered at the end of the course. This exam is given at the end of the course. The objective of summative evaluation is to test the utility of current or predetermined education policy, planning, program, curriculum, teaching method, etc. तो सब उसकी उपलब्धियों का विश्लेषण करना, ये दिस इज द एम ऑफ सुमेटिव इवोल्यूशन. Summative evolution certifies the achievement of the learner. प्रमाणित करता है, प्रमाणित किया जाता है कि ये प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई, ये द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण, ये तृतीय. After this, certificate, grade and merits are provided to the learner. So these were the 4 evolutions, and every evolution has some purpose. And what is the purpose? First formative है, फिर फॉर्मेटिव है दूसरे नंबर पे, फिर डायग्नोस्टिक है, फिर डायग्नोस्टिक और फिर समेटिव है. तो चारों के उद्देश्य है. प्लेसमेंट पहला है, विच इज एट द एंट्री ऑफ द कोर्स. व्हाट नाउ देयर आर असाइनमेंट क्वेश्चन. व्हाट आर द प्लेसमेंट इवोल्यूशन
and formative evolution. It is entered at the beginning of the course to find out the behavior or the attitude of the learner. And formative evolution is to give the feedback to the student according to the achievement of the placement evolution. What are the diagnostic and summative evolution? Diagnostic evolution is to find out the weakness of the student, in which area, in which thing he is not satisfactory. And according to diagnostic evolution, remedial teaching is given, extra teaching is given to remove the weakness. And summative evolution is entered and administered, executed at the end of the course to provide the learner certificates, grades and merits, etc. So, third, what is the aim of diagnostic evaluation? The aim of diagnostic evaluation is to find out the difficulty of the learner, to find out the weakness of the learner, in which area he is weak, and to provide him remedial teaching. This is the aim of the right. What is the aim of summative evaluation? The aim of summative evaluation is to provide certificate, merits, and grades to the learner. It is entered at the end of the course. And fifth question, what are the types of evaluation? Describe them in detail. All the four evaluation. Thank you, my dear. Now I have to give you some advice that due to this epidemic corona, whenever you leave your house and go out, don't forget to wear the mask. And to maintain 6 foot distance between any person and you. And after coming home, first of all you have to wash the hands with the sanitizer or the soap, and only then you can take water, food, etc. जब कभी भी आप जब बाहर जाओ तो मास्क पहन के जाएं और बाहर किसी भी व्यक्ति से 6 फुट की दूरी रखें, ध्यान रखें। और घर पे आने के बाद में सबसे पहले आते ही अपने हाथ धोएं और उसके बाद ही हाथ खाना पानी इत्यादि लें। उसके पहले जो है बाहर जाते हो तो हाथ मुंह में या कान में नहीं डालें। ठीक है, ध्यान रखें इसका।